So, but I'll be attending this session. Sure. Good, Thank good. you. Enjoy your drive. It's a beautiful drive. And आज मौसम I भी love बहुत your अच्छा session. है. आज बहुत अच्छा है. Yes, I'm enjoying the sunrise. And बहुत अच्छा आपका session है जो आप लेते हो. मैं ज़्यादा active नहीं रहती हूँ, but really enjoy it. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Okay. You started streaming? Yes, yes, please start. So good morning and welcome. And I am so happy and glad to be part of Mavin. And today's chapter is actually what Mavin is already doing. That is about contributing in other people's life and bringing positivity and whatever they desire in their life. Because when I was going through the Mavin ke baare mein jo shuru mein aata hai 8 baje, you are on a mission to help people reach their potential and help them in finding their dreams. And I'm so proud to be part of this mission. And a big congratulations to the Mavin team for the anniversary, and really feel very proud of the fact that I'm part of it in small little way, whatever I am. So I'm also contributing my bit into it. So thank you for giving me that opportunity. Right? So abhi hamare, I think around 4 chapters reh gaye hain. And the journey we started some 6 months ago is coming to an end very soon. And kahin na kahin wo lag raha hai ki khatam kyun ho raha hai. Every Tuesday I used to look forward to meet all of you. And I hope I've been able to add some value to your lives. And so today's chapter, before I start, I just wanted to recap the previous chapter we did 15 days ago, because last Tuesday I was not here, I was traveling. So we talked about the magical air that we breathe. आप में से कितने लोगों को लगा कि this was so amazing? हमने कभी हवा के बारे में ऐसे सोचा ही नहीं. Anybody would like to share? हमने हवा के बारे में ऐसे सोचा ही नहीं कभी. We just take it for granted कि सांस तो आनी है. You don't have to make any effort. Oxygen अंदर जा ही रही है, carbon dioxide निकल ही रही है. Without our knowledge, ये तो हो ही रहा है. But we never paid any attention कि it is such an awesome and amazing thing which universe has provided to us to survive on this planet. And how the universe has created the structure for us to have abundance of air, abundance of oxygen. So आप में से किसी को लगा था इस सेशन के बाद कि वाओ, हमने तो कभी ऐसे हवा के बारे में सोचा ही नहीं. Anybody would like to share? मीना जी, शबाना, anybody else? किसी को याद है चैप्टर के बारे में? या वैसे तो 15 डेज हो गए हैं, बहुत कुछ हुआ उसके बाद. आप लोगों ने बहुत सारे सेशंस अटेंड किए हैं. एवरी डे यू बीन अटेंडिंग, बट अगर हल्की सी भी मेमोरी रही हो उसकी तो. So magical air, yes, of course. हाँ, मीना जी, आपका थोड़ा नेट का इशू आ रहा है because you are on the road. So I mean, you can write it in the chat box. Life is when all the organisms are breathing. Number one is air. Yes, yes. That's true. That's true. Anyway, so thank you so much. And जब मैंने ये वाला चैप्टर पहली बार पढ़ा था ना, मतलब मेरे तो I had goosebumps. I had goosebumps when I realized how universe is, हमारे planet की positioning कैसे है, और फिर हमारे planet को किस तरह से protect किया हुआ है ताकि यहाँ का ऑक्सीजन यहाँ से बाहर नहीं जाए. Because there's no oxygen out of this orbit of Earth. अब इसके बाहर निकल जाते हो तो ऑक्सीजन है ही नहीं है. देखा ना चांद पे वो कैसे सिलेंडर्स उठा के चलते हैं. या सो किस तरह से प्रोटेक्ट किया हुआ यूनिवर्स ने हमारे इस प्लैनेट को कि ये ऑक्सीजन हजारों सालों से अंदर ही है यहाँ पर. और इमेजिन करो वो दूषित भी नहीं हो रहा है. जब हम एयर कंडीशनड रूम में होते हैं तो सेम एयर इज गेटिंग सर्कुलेटेड, दैट स्टेल एयर. पीपल स्टार्ट फॉलिंग सिक बिकॉज फ्रेश एयर ही नहीं आ रही होती है.
है ना? But imagine this universe has provided कि replenishing system इतना अच्छा बनाया है कि हम जो breathe out करते हैं वो trees breathe in करते हैं, and trees are making oxygen for us all the time. तो वो खत्म ही नहीं होता है unless we cut all the trees, which unfortunately हम human beings ने बहुत सारे काट दिए, and there is a imbalance in the ecosystem. But otherwise, universe is given in abundance. And you know, every time you take a deep breath in the open air, उसको फील करते हैं ना, जब हम यहाँ से नाक से होकर, गले से होकर, चेस्ट से होकर, यू नो, हमारे स्टमक तक जा रहा है, स्टमक से नेवल तक, नेवल से नीचे तक जा रहा है, and then when you breathe out, you feel that breath coming out. It gives you so much of, you know, that calmness, and it gives you so much of power, because this air is what is keeping us alive. प्राण शक्ति है ना हमारी, ये हमारी प्राण शक्ति है. So that was the chapter we did last, I mean, whenever we had the session. आज का सेशन जो है वो मेविन से बहुत रिलेट करता है. You know, when we started this gratitude practice, जब हमने शुरू करना शुरू किया और पता चला कि इससे हम अपनी जिंदगी में हर एरिया में कुछ ना कुछ जो भी हम चाहते हैं वो पा सकते हैं. Like we want to improve our health, we can use gratitude's power to improve our health. We want money, we can attract money into our life. हम अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं, रिश्तों में प्यार लाना चाहते हैं, we can use gratitude for that. And we touched so many different aspects of our life where we can cause transformation by using the power of gratitude. पर जब हम ये सब इस जर्नी से निकल रहे थे ना, तो कहीं ना कहीं मन में आया, अरे यार मेरी फ्रेंड भी कर लेती ना तो कितना अच्छा होता. शी इज स्ट्रगलिंग इन दिस एरिया, उसका हेल्थ में इश्यू चल रहा है, अगर वो भी एक सेशन कर लेती ना, उसको भी पता चल रहा था कि अगर वो हर बार अपनी बीमारी के बारे में बात ना करे और उसकी जगह ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दे, तो हर हेल्थ विल स्टार्ट इंप्रूविंग. हमने यही तो सीखा. wherever there is a complaint, wherever there is a blame, जहां भी नेगेटिव थॉट्स हम दे रहे हैं, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो मनी है, चाहे वो रिश्ते हैं, वो चीजें खराब हो रही हैं, डिटीरिएट हो रही हैं, और हम इसके बारे में जानते भी नहीं है कि हम अनजाने में ये सब कर रहे हैं. You know, we don't even know that we are doing this because किसी ने बताया ही नहीं. और डिफॉल्ट मोड हमारा वही है. 80 to 85% तो हम नेगेटिव ही सोच रहे होते हैं, या तो कंप्लेन कर रहे होते हैं, या क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, या ब्लेम कर रहे होते हैं, राइट? तो हम अपने लाइफ के एरियाज को अपने आप सैबोटेज कर रहे हैं, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो बिजनेस है. हर एरिया में अगर हम नेगेटिव थॉट्स दे रहे हैं तो हम उसका खामियाजा खुद भुगत रहे हैं. और हमें ये लगता है कि हमें ये थोड़ी थोड़ी नॉलेज मिल गई है, काश मैं उसको बता सकती, काश मैं उसके लिए कुछ कर सकती. फॉर एग्जाम्पल, इफ योर चाइल्ड इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम और उसको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, कैसे होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे एडमिशन नहीं होगी. सो व्हाट इज दैट चाइल्ड डूइंग? इज पुटिंग नेगेटिव थॉट्स इनटू इट, एंड आपको दिख रहा है, एंड यू वांट टू टेल दैट चाइल्ड, डोंट डू दिस, it's not good for you. Start saying that I will be able to do it, I am preparing for it. आप करना चाहते हो उसके लिए पर कर नहीं पा रहे हो. सिमिलरली आपकी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में कोई है जिनके घर में बड़ी स्ट्रेस है, अशांति है. आप कहते हो यार भगवान करे इनके घर में कुछ तो शांति आए. या कभी कभी ऐसा होता है किसी के घर में एक के बाद एक परेशानियां आती जाती हैं, और आपको लगता है भगवान कुछ तो हो जाए इनके घर में, कुछ तो कहीं से तो ठंडी हवा आए, कहीं से तो कुछ खुशी आए, इनके तो घर में एक के बाद एक परेशानियां ही आए जा रही हैं. हम चाहते हैं, बिकॉज एज अ ह्यूमन बीइंग वी वांट टू कंट्रीब्यूट. हमारी इनेट इच्छा यही होती है कि हम कंट्रीब्यूट करें, पर हम कंट्रीब्यूट तभी कर सकते हैं ना जब हमारे पास कुछ है. जो चीज हमारे पास है ही नहीं वो हम दे ही नहीं सकते हैं. अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे 1 करोड़ रुपया अभी दे दो,
और आपके पास सिर्फ 50 लाख रुपए, तो क्या आप दे सकते हो मुझे? नहीं दे सकते। आपके घर में सब्जी बनी है और मैं बोल रही हूँ मुझे दाल दे दो, एक कटोरी दाल दो बनी हुई है, तो अब कैसे दोगे? आपके घर में तो बनी ही नहीं है। Very simple, lame examples I'm giving. You cannot give what you don't have. You can only give what you have. आपकी जेब में अगर 100 रुपया है, तो आप किसी को, कोई अगर आपसे रास्ते में मांगता है कि मुझे बाबूजी या मैडम मुझे प्लीज चाय के लिए 10 रुपए दे दीजिए, तभी आप उसको वो 10 रुपए दे सकते हो। पहले तो होने चाहिए, फिर इंटेंशन भी होनी चाहिए, है ना? तो अभी आज हम जो बात करेंगे, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इंटेंशन ऑफ हेल्पिंग अदर्स, जो हमारे अंदर है, पर हम अपने में ही इतने फंसे रहते हैं, अपनी ही परेशानियों से इतना जूझ रहे होते हैं. We are dealing with so many challenges that we are not able to help others. Now, since we have been practicing it for so many months now, इतने दिनों से हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हैं. हमारे लाइफ के एरियाज में जहां जहां पर भी चैलेंजेस हैं, अंधेरा है, वहां हम उजाला कर सकते हैं ग्रेटिट्यूड से. हमने सीख लिया, कुछ कुछ सीख लिया, कहीं कहीं अप्लाई करना शुरू कर दिया, and we can see the difference. We can see the difference happening in those areas of our life. We can feel the difference in our own feelings. We feel lighter, we feel happier, we are more joyful, we are more connected to nature. ये छोटी छोटी चीजें जब होने लग जाती है ना, तो these are the symbols that the gratitude practice is working. अब जब आपने अपने ऊपर काम करना शुरू किया और आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हुए, that is when you want to make a difference in other people's life. अब आप बाहर कुछ और लोगों के बारे में सोचना शुरू करते हो कि काश मेरी बहन के घर में जो पैसों की इतनी तंगी चल रही है वो ठीक हो जाए, काश मेरे फादर इन लॉ के घुटनों में जो दर्द है वो अपने आप चल पाए, काश मेरा बच्चा अपने एग्जाम्स में पास हो जाए, काश मेरी बेटी जो है उसकी सैलरी बढ़ जाए, काश मेरी बेटी के लिए अच्छा लड़का मिल जाए. Then we start thinking about others. अभी हम क्या सोच रहे हैं? सिर्फ अपनी फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स के लिए. But once we start practicing it and we know it works and you start feeling compassion for others, then you want to do it for everybody else in the world. मदर टेरेसा या जितने भी लोगों ने लोगों के लिए इतना कुछ किया, नेल्सन मंडेला, जितने भी ये लोग हुए हैं, क्यों किया? They wanted to touch each and every life. जितने भी महान पुरुष हुए हैं या महान इंसान हुए हैं, आत्माएं हुई हैं, they wanted to touch other people's life because they knew the power, कि मेरे पास पावर है. हमने जितनी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस की है, हमने अपने ग्रेटिट्यूड के खाते में अपनी वो पूंजी जमा कर ली है. जितना प्रैक्टिस करते हैं उतनी है हमारी वो पूंजी बढ़ रही है. अब वो जो पूंजी है वो हमारी पावर है. Now this power we can use it for anything. We can use it for our own self. Once we are, satisfied with whatever we are doing for ourselves, we feel we have power to touch other people's lives also. But पहले वो power generate तो करो. अगर आपने वो power generate की है, enough gratitudes करके, everyday gratitudes करके, अगर आपने everyday gratitude वो 10 gratitudes भी किए हैं या footsteps भी किए हैं, कुछ भी किया है, खाता तो बढ़ा ही है ना, आपके अकाउंट में accumulation तो हुआ ही है ना. Now that power you can use to help your family and friends. जहां भी वो struggle कर रहे हैं, जहां पे भी उनकी challenges हैं. Now it says energy flows where attention goes. जहां भी आप attention अपनी focus करते हो, हमारी सारी एनर्जी वही फ्लो होती है. ये हम पता नहीं कब से सुनते आ रहे हैं, बट प्रैक्टिकली देखो आप, when you have this power which is an energy, right,
We all are energy, right? तो gratitude की power जो हम generate कर रहे हैं, that is also an energy. That energy, when you focus on somebody, अगर आप वो फोकस किसी और के ऊपर करते हो, तो वो एनर्जी उधर ही जाएगी. जब वो उधर जाएगी, तो वहीं पर वो ट्रांसफॉर्मेशन लाएगी, वहीं पे वो कुछ फायदा देगी उनको, है ना? So today we are going to talk about how we can actually help others, whoever is struggling in their life, by giving them the power of gratitude. Gratitude आप कर रहे हो, पावर आपके पास है, आप अपनी उस पावर को उनकी जिंदगी को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. There are lots of people who do donations, ना? NGOs में डोनेशन देते हैं, वृद्धाश्रम में देते हैं, अर्थ सेवियर्स में देते हैं, है ना? गूंज में कपड़े देते हैं जिनके पास ज्यादा कपड़े. Now look at this. आपके पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं, बिकॉज आपके पास हैं तो आप डोनेट कर रहे हो. आपके पास पैसे हैं तो आप डोनेट कर रहे हो, है ना? So similarly, if you have the power of gratitude, then you can touch other people's life. So today we are going to be talking about how can you actually help others if they are struggling in their life. And that is why I said this chapter is connected to Maven, because Maven is doing that for years now. Is touching people's life so that in some way or the other, they can actually help them manage or empower them to manage whatever they are dealing with. Whether it is negativity, whether it is any area of life जहाँ पे उनको कुछ knowledge चाहिए. They're sharing knowledge. So many people are coming on this platform to share their knowledge. और वो knowledge किसको कहाँ काम कर जाएगी पता नहीं है ना. यहाँ तो हम देने के भाव से ही आए हुए हैं ना सब. So आज का chapter is also about giving. Giving to others the power you have generated. या और उससे क्या होता है? आपने देखा है कभी दिवाली के टाइम पर या जब भी होता है तो आप दिए जलाते हो. एक दिए की लौ कम हो रही होती है, तो आप जब दूसरे दिए से उस दिए की लौ को बढ़ाते हैं, तो जिस दिए से बढ़ाते हैं उसकी लौ बढ़ जाती है. देखा है आपने? Has anyone actually seen this? कि जब आप एक दिए की लौ बढ़ाने के लिए दूसरे दिए की लौ से उसको जलाते हो, तो जिससे जला रहे हो उसकी लौ एकदम से बढ़ जाती है. So yes. yeah, that's right. So when you are actually trying to contribute in other people's life, your power enhances, double हो जाती है. एक तो आप उसका फायदा कर रहे हो, दूसरा आपका अपना फायदा हो रहा है. It's a win-win situation, right? तो आज हमने क्या करना है? हमने अपनी फैमिली में या अपने फ्रेंड सर्कल में think about 3 people जो आपको लगता है अपने हेल्थ के एरिया में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, या उनके घर में स्ट्रेस है, या अनहैप्पीनेस है, रिश्तों में कड़वाहट है, या उनके घर में पैसे की कमी है. फॉर एग्जाम्पल, a friend of mine wanted to send his son to study abroad. उनका लोन ही पास नहीं हो रहा था. And he was so stressed out. Now, at that moment, if you want to send them the power of gratitude, आप में से बचपन में सबने वो परियों की कहानी पढ़ी होगी या सुनी होगी कि उसके पास मैजिक वॉन्ड होता है, उसके आगे तारे तारे होते हैं, वो जिसको टच करती है उसकी विश पूरी हो जाती है. या एक वो मैजिक पेंसिल वाली बच्चों का एक कार्टून होता था ना, उसकी पेंसिल में मैजिक होता था, वो उस पेंसिल से जो भी ड्रॉ करता था वो सच हो जाता था. शाकला का बूम बूम करके वो कुछ ड्रॉ करता था और वो हो जाता था. तो दैट मैजिक वॉन्ड आप खुद हो. कैसे बनते हैं मैजिक वॉन्ड? When you have a strong desire to help someone, coupled with the gratitude power. जब आपके पास gratitude है और बहुत strong desire है किसी की help करने की. For example, a friend of mine is actually going through a very difficult relationship right now. Last 3 days, she's been really upset and like though I've been,
trying to see positive side of it. And but जब इंसान उस सिचुएशन में होता है ना, तो कई बार उसको उसमें से निकलने में टाइम लगता है. आप हाथ पकड़ के भी उनको निकालने की कोशिश करो तो स्ट्रगल होती है कई बार. So she is dealing with that relationship ka thing. And the moment I was preparing for this session, the only thing I was thinking was about her and her relationship. अब वहां पर वो relationship का issue है. अब that guy wants to send his son to study abroad. वहां पे पैसे का issue है. किसी के घर में हो सकता है स्ट्रेस हो बहुत ज्यादा, है ना. स्ट्रेस बहुत सारी चीजों का है. पैसे की भी कमी है, घर में आपस में बनती नहीं है. And you want that family to be happy. हो सकता है आपको पता ही ना उनके घर में इशू क्या है, बट आपको दिखता है कि कुछ तो है. सुखी नहीं लगते, खुश नहीं लगते. आई विश इनके घर में सब खुश रहते. आई विश इनके घर का माहौल अच्छा होता है ना ऐसे कई बार. तो वेयर एवर आपको ऐसा लगता है कि somebody is struggling either relationship, money, health, हो सकता है किसी का हेल्थ का इशू चल रहा हो. जैसे there's a friend of mine, उसकी wife, I think it's been 7 years she's bedridden. She's undergone so many surgeries, and because of that everybody in the family is struggling, right? इस तरह से आपके family circle में, friend circle में, whoever is struggling and you really want to reach out and help that person, होते ना अंदर से दिल करता है हाय मैं कुछ कर दूं इसके लिए. So whenever you're feeling like that for somebody, pick 3 such people. कोई भी एरिया हो सकता है आपको पता ही ना हो एरिया क्या है, बट आपको दिख रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है इनके घर में, या इस इंसान की जिंदगी में कुछ तो गड़बड़ है, पर ये बोलता नहीं है, बताता नहीं है किसी को, है ना. तो ऐसा कुछ हो सकता है. तो थिंक ऑफ सच 3 people and what are you supposed to do? If you know exactly what is the issue, if it is money, then money के बारे में. If you feel it is relationship हो सकता है, happiness हो सकती है, health हो सकती है. अगर आपको पता है कि एरिया क्या है, then think about that. So what are you supposed to do? You're supposed to hold their picture in your hand. सबके DPs तो होती हैं आजकल, so you don't have to worry about the pictures. जब हमने शुरू किया था ये प्रैक्टिस करना, तो हमें एल्बम में से फोटोएं ढूंढनी पड़ती थी, तब फिजिकल फोटोग्राफ्स होती थी. तो अभी तो फोटो ढूंढने की वो चैलेंज ही नहीं रह गया, बिकॉज एवरीबडी पुट्स अ डीपी. तो आप उसके डीपी खोल लीजिए एंड लुक एट दैट पर्सन. उसको हाथ में रखना है. वो हाथ में क्यों रखना है? बिकॉज हाथ में हमारे पावर होती है. हाथ से हम ब्लेस करते हैं. हमारी पावर हमारे हाथ में होती है. आपने देखा जब कोई महापुरुषों के पास जाता है या कोई पहुंचा हुआ इंसान होता है, तो हम क्या कहते हैं कि अपना हाथ हमारे सर पे रख दो. Why? Because energy flows through your hands and also flows through your feet. हम बड़े बुजुर्गों के पांव छूते हैं. क्यों? We want to get that energy into ourselves. अच्छे इंसान के पांव छूते हैं, जिनसे हमें लगता है कि हमें कुछ मिल सकता है, कि इनके अंदर बहुत कुछ है. तो वो एनर्जी को हम अपने अंदर लेते हैं. The moment you touch your hand to the feet of that person, the energy flowing from that person's body flows into your body. Similarly, जब आप हाथ से किसी को छूते हैं या किसी के सिर पे हाथ रखते हैं, तो आप अपनी एनर्जी फ्लो कर रहे हैं. तो जिसके अंदर ज्यादा पॉजिटिविटी है, अब जितने लोग, अब अगर आप जितने लोगों को देखो, आप फॉर एग्जाम्पल जितने भी लोग ये चलो सदगुरु का नाम ले लेती हूँ. आई डोंट नो हाउ relevant is that, but I'm just saying ऐसा ही कोई holy person or a person who's very elevated or evolved, I would say that उसने अपने लिए जो करना था कर लिया है, और वो आज भी ग्रेटिट्यूड में. जितने भी महापुरुष या ऋषि मुनि या जितने आज के इस कलयुग में भी जो लोग हैं, जो हर वक्त परमात्मा का नाम जप रहे हैं. तो नाम जपना क्या होता है? That with every breath you are saying thank you, you're paying gratitude. तो उनका सोचो पावर कितनी बढ़ गई है, उनके पास कितना अकाउंट में एक्यूमुलेट हुआ है. उन्होंने अपने लिए जो यूज करना था कर चुके.
They have excess. सरप्लस है उनके पास. अब वो सरप्लस में क्या करना चाहते हैं? लोगों का भला करना चाहते हैं, सबका भला करना चाहते हैं, सर्वत का भला करना चाहते हैं. So what they do? They keep giving it to people. And how do they give it? Through energy transfer. तो जब भी वो कुछ करने लगते हैं ना, they don't feel arrogant about it कि मैं कर रहा हूं. They always pray to God before giving that also. आपने देखा होगा या तो वो आंखें बंद करते हैं या पहले हाथ जोड़ते हैं before even blessing you, because वो एनर्जी ऊपर से लेके आपको दे रहे हैं, because they are connected, because उन्होंने इतना accumulate किया हुआ है कि वो एनर्जी जब बाहर फ्लो हो रही है तो अंदर अपने आप रिप्लेनिश हो रही है, पीछे से आती जा रही है. बट वो करने से पहले भी उसको कहते हैं कि आपकी वजह से है, you only doing it, right? So similarly, when you have accumulated that power of gratitude and you want to help others, you are supposed to hold their picture in your hands, because हमने क्या करना है? Power of gratitude की energy उनको देनी है. So hold the picture of the person in your hands, close your eyes and visualize. अब visualize क्या करना है? Whatever area they are dealing with, if somebody is dealing with health, for example, if somebody is dealing with अब जैसे वनीता है वनीता के ले लेते हैं. वनीता has been having cough and cold. छोटा सा एग्जाम्पल लेनी मैं, मतलब कॉम्प्लिकेटेड वाला नहीं लूंगी. You can use it wherever you feel that it can be applied. So when she's going through that problem, she's having a lot of cough and cold and she's feeling drowsy and जब भी बुखार आ जाता है ना, ये मौसम चेंज में सबके साथ हो रहा होता है. Now if I close my eyes and visualize it, that somebody comes and tells me, ये वनीता को क्या हुआ, इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई, ऐसे कूदती हुई नीचे सीढ़ियां उतर रही थी, and she was looking so fit and fine. आप तो कह रहे थे उसको जुकाम हुआ है, उसको बुखार हुआ है, but she was so fit and fine. So what is happening? I am visualizing she's perfectly fine. And somebody is coming and telling me, because that is more believable. Yeah? और कब हो रहा है? अभी हो रहा है. At present. And what am I doing after that? Oh, I am so happy. Thank you. Thank you. Thank you that she's fine. बस यही करना है. You have to visualize that whatever challenge they are dealing with, that has been resolved. And you're getting a news from somebody, maybe a call you are getting, maybe somebody meets you on the road. For example, when I was talking about the guy who wants to send his son abroad to study and uska loan nahi ho raha hai, and just imagine that I get a call from somebody, तुझे पता चला क्या, वो रमेश है ना, उसका बेटा चला गया कनाडा. अच्छा, कैसे? उसका तो लोन ही नहीं हो रहा था. नहीं, उसका लोन हो गया. उसके कोई अंकल थे, वो अंकल को पता चला तो उन्होंने he gave the surety उसकी, and उसका लोन पास हो गया और उसका सब कुछ हो गया. 15 दिन में सब कुछ हो गया, वो चला भी गया. And I'm feeling so happy for it. I'm feeling happy for him that because there was a concern in my mind, okay, poor thing, yaar, he's been struggling so much. He wants to send his son and ho nahi raha hai. So I'm visualizing that somebody has met me and told me that this has been done. And you have to involve yourself in the picture. ये बहुत जरूरी है. When you're visualizing, you have to be in the frame. जब मूवी चल रही होती है, हम सीरियल देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो उसमें कैरेक्टर्स होते हैं ना, तो जब आप ये विजुअलाइज करोगे, you as a character has to be there. Why? Because then only you will feel happy. And it is all about feelings. When you feel happy and you give that power of gratitude, you say, thank you, thank you,
Thank you. I'm so glad. I'm so happy. That is what is needed. So जिस भी एरिया में कोई भी स्ट्रगल कर रहा है, challenges हैं उसके, आपने वही सोचना है. For example, if somebody is dealing with a health issue, या किसी का पास पैसे की कमी है, या किसी के रिश्तों में, जैसे मैंने बताया मेरी फ्रेंड के रिश्तों में कुछ 3 दिन से उसका कुछ चल रहा है. The moment I was preparing for the session, I just visualized that she called me up and said, यार सब resolve हो गया, ये ना मेरा ही दिमाग ओवर टाइम काम कर रहा था. And I got a call from that person, and she's happy and bubbling with joy that that it has been resolved and everything is falling in place now. And when she's talking to me, I am feeling so happy, and I'm feeling so जैसे अंदर से खुशी से मेरे को जैसे कहते खुशी के फवारे छूट रहे. I'm feeling so happy. Thank God इसका ये resolve हो गया. I'm so happy for her. And I say thank you, thank you, thank you. That's exactly what I did in the morning. 6 o'clock in the morning, I was, going through this preparation, and that is exactly what I did for her. And I did the same thing for her, not for the relationship. When I think in 2020, when I was doing this session, the same friend of mine was dealing with something else. She didn't have a, house of her own. Her father-in-law was, not giving house to her. And she was staying in some rented house. Father-in-law, 90 years, अकेले रह रहे थे. And उसको बहुत इस चीज का बड़ा रहता था कि मेरे सर पे छत नहीं है, मेरे सर पे छत नहीं है. And when I was doing this exercise, I just visualized that she called me up and told me that, you know what, she used to call him Dada. So Dada has actually given the house to me. And I'm so happy. At least now I have a, roof over my head. And I felt so happy for her. And I blessed her and sent her so much of blessing. And I said, thank you, universe, for giving her that, what she wanted. And within 1 week, I got a call from her. It actually happened. Her father-in-law gave that house to her. And he moved out of the house. He went to stay with one of his relatives and said, now this house is yours. Tu jaise rakhna chahti hai rakh. Jaise rehna chahti hai reh. And since then, now the father-in-law has passed away now. Since then, now it is her house. This magic works. It really works. And I'm sure what I did today for her is going to work for her. Jagjit ji, Haji, do you have any magic ones for being overly positive and to relieve pain? You can become that magic wand yourself, Rajwin. You don't need any magic wand. You are a magic wand. The strong desire and gratitude makes you the wand. That's the why strong desire. Yeah, the strong desire. That's why I've been listening to Gurbani, and Gurbani has all the answers. Absolutely. Whatever you want, Gurbani has. Something happened last week, just after this session, like where trauma happened. Somebody came and disturbed my mother. The third party came and disturbed my mother. So and then myself also got my name also came out. It was my own relative. And then I got over it now. It's all resolved. And thanks to Vaiguruji, I always do the gratitude practice. I know you've been doing that every day. And then I always do the what do you call Gurbani Tati Wow. Yeah, Shabad ka Paath. To relieve all the negative energy of my life.
And today I got back the pain. So thankfully I am doing my laughter yoga and listening to the prayers, and I'm doing so well. So hopefully next Tuesday will be my appointment with the doctor, Monday and Tuesday consecutively. And I hope to be in good health very soon. So everybody who's on the session right now, become a magic wand for Rajwin's health. Everybody visualize that she has been out of pain and she's feeling, happy and healthy as far as her health is concerned. And you are getting a message from her that she's so happy that she has good health now. And don't use the word no pain, because no means you are inviting, because universe doesn't understand no. When you say pain, that means you're asking for pain. So don't say pain, just say I have healthy body and I am so healthy and up and about, right? So everybody, I'm requesting all of you, because she has reached out to all of us. I want all of you to become magic wand for her health today. So one person, because 3 people you're supposed to do, let one person be Rajwin. Yeah, Rajwin? Yeah. And we all are going to be a magic man for you today. So instead of no pain, what would I say? Discomfort? If you don't have pain, how would you feel? Happy. Okay, so you just have to say happy. If you want to say healthy, you can say healthy. Discomfort is also a negative word, so you don't have to say. Yeah, I always say I'm happy, I'm healthy, I'm blessed, I'm cheerful, I'm smiling. Yeah, wonderful. But Rajvin, the only problem with us human beings is that we are wired like that. We say these things, whatever you just said, that you're happy, healthy, and cheerful. We just say it once or twice in a day, or maybe 15 times in a day. But I say it every day, despite the pain. But how many times do we say? But on the other hand, at least 100 times we say, we have a pain. 100 times I say I'm healthy, I'm happy. Good. So you have to increase the number of positive affirmations you are doing. So this is an affirmation you are doing, right? But when the pain becomes unbearable, how do we then still say I'm happy, I'm healthy? So you can start paying gratitude for the rest of the body, which is working fine. The legs are working fine. Wherever there is a pain, don't talk about that. Don't focus on that. Focus on the areas of life or of your body which are working fine. For example, you are able to see. Yeah, you're able to hear. You're able to speak. Yeah, you're breathing. Yeah. Your digestive system is working. Your hands are working, right? Yeah. So you have to just focus on things which are working fine and start paying gratitude for all those parts of your body. How about you saying that the health, but how about when you are so positive and then some negative triggers, like negative people, negative opinions come into you, then you get negative opinions of others come into you, then you trigger. So Rajwin, the more practice you do, the more you will start protecting yourself from all this. It actually creates that kavach hota hai na, jaise it creates a shield, because that your positivity is so high that negative things will come and bounce back. They will not come and touch you. So the only thing is that you have to increase the positivity into your life, the gratitude practice into your life, that nothing negative can come and touch you. Even if it comes and touches you, it will not impact you.
right? But not the things, the people actually. Yeah, the I'm people. talking about people only. People say things, people do things, right? So once you're protected by the power of gratitude, the positivity, nothing will touch you. They will just come and go back. It will not go deeper inside and trigger you, right? So thank you so much for sharing. And let me just complete the chapter. So we were talking about you're supposed to pick 3 people और उनकी लाइफ में क्या हो रहा है जिसमें आप चाहते हो दैट वो बेटर हो जाए. स्ट्रेस्ड हो सकता है, कोई एंग्शियस हो सकता है, किसी को मेंटल डिप्रेशन में हो सकता है. People are going into depression so often these days, people are walking like चलती फिरती लाश की तरह चल रहे हैं, कुछ इमोशंस नहीं आ रहे हैं, कोई कुछ नहीं हो रहा है. I have seen so many people walking like that. In today's world, people are so stressed out and there's no outlet. अंदर इतना कुछ भरा है, निकालने के लिए जगह नहीं है, टाइम ही नहीं है, पता ही नहीं है, right? So whatever you know to ease their pain, to ease their discomfort, first there has to be an intent. पहले तो intent होना चाहिए कि हम किसी का भला करना चाहते हैं. Once you have that intent, that desire, that strong desire, coupled with the power of gratitude, will work as a magic wand. तो आज आपने 3 लोग अपनी लाइफ के देखने हैं जो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं. आपने उनकी फोटो को अपने हाथ में रखना है. You have to close your eyes, visualize it, that issue has been resolved and they are happy. That you are getting that message from somebody. वो खुद डायरेक्टली नहीं बताएं क्योंकि वो आपको बिलीवेबल नहीं लगेगा. वो बिलीवेबल नहीं लगेगा. So somebody is giving you that message. Could be on a call, could be you're meeting somebody, could be a third person coming and telling you, तेरे को पता चला, मुझे उसने बताया कि ऐसे हुआ. Yeah. So you have to imagine that, but you have to be in the picture because feeling आप ही की है. Gratitude की power आप ही की काम करने वाली. And then you're supposed to say, thank you, thank you, thank you, because you're creating that. When we say thank you 3 times is creation process. We are creating that for that person कि उसके लिए ये create हो जाए. And in the present, we are creating it. And you will see the magic happening. Right? And the other thing is, you can do it for others also. जैसे आप घर से बाहर निकले आप, जैसे आज आप बाहर जाएंगे, and you see somebody who like you really want that इसका कुछ अच्छा होना चाहिए. For example, कोई रेडी वाला खड़ा है, उसके पास फ्रूट बहुत सारा पड़ा है, कोई ले नहीं रहा है उसका फ्रूट. So you can just magic wand के इसका सारा फ्रूट बिक गया. Visualize it. इसका सारा फ्रूट बिक गया and he is so happy. He's carrying all the money in his hand and he's looking at the sky and saying, thank you भगवान, आज तो तूने सारा मेरा फ्रूट बेच दिया. And you're saying thank you, thank you, thank you for him. You see somebody you limping on the road, नहीं चल पा रहा, and you just send that magic wand, उसको touch कर देते हैं आप कि he's able to walk or she's bless that person, that restore his health or restore this person's health. Yeah, you can do that today. जिसको भी देखो आप रास्ते में, जिसके लिए आपका दिल से निकले आवाज, यार इसका कुछ भला होना चाहिए आज. या ऑटो वाला है, मान लो आप ऑटो में कहीं जा रहे हो, and when you're giving money to that person, just visualize, आज ये पूरा दिन इसने बहुत पैसे कमाए हैं, इसके घर में बहुत बरकत आएगी आज. And say thank you, thank you, thank you. You created that for him. And the magic will start. अब जब आप इतना कुछ उसके लिए कर रहे हो, तो क्या परमात्मा आपको नहीं देगा? मैंने तो बोला पहले, जब एक दिए से आप दूसरे दिए की लॉ बढ़ाते हो, तो पहले वाले दिए की लॉ भी बढ़ जाती है. And what does law of attraction says? What goes around comes around. आप जो दोगे, वो भर भर के आपके पास भी आने वाला है. So it's a win-win situation. So today, अभी तक हमने जितना कुछ भी सीखा इस बुक में,
जो भी हमने सेशंस किए, we were working for our own self. Now we have come to a level where we can give it to people now. तो अब हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि हम बाकियों को भी दे सकते हैं कुछ, क्योंकि हमारे पास आ गया, कुछ तो आ गया. जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आएगा, और उसमें से उतना ही दे पाएंगे आप. तो एक तो अपनी प्रैक्टिस बढ़ा लीजिए. And the other thing is, if you feel that intent of touching somebody's life, contributing in somebody's life, so this chapter actually tells you how to do it. Become a magic wand in people's life. परी बन जाओ ना, छुआओ जादू की छड़ी सबको, सबको छुआओ. And you will be so blissful, because देने में जो मजा है ना, वो लेने में नहीं है. Yeah. So that is what I wanted to say about today's chapter. Anybody wants to say anything or add something or have any questions, can say. Samina ji, Vasant ji, Shabana, Thank Meena you, ji. Jagjit ji, for a wonderful session. Thank you, Rajvin. And we all are going to send you the magic wand and the blessings for your health. Health and career, yeah. I'm supposed to get an interview. I'm still waiting for an interview since I won the title. I'm still waiting. So do the magnificent outcome before doing that. What is that? If you have not attended that session, look for the magnificent outcome session. And before the interview starts, say thank you for the magnificent outcome of my interview. Yeah. And whoever is coming for the interviews, pay gratitude to that person. All right. Thank you for coming, and thank you for selecting me for the interview, and the organization which has selected you for the interview. The organization maybe is Miss Amazing Malaysia, because I've won. Yeah, I know that. And I'm so proud of you. You are doing great. And I really want that you just write down gratitude for all of them before the interview, and just before the interview starts, say this: thank you for the magnificent outcome of my interview. Right? Okay. Yeah. Thank you. Yeah. Shabana, you can take over. Thank you so much, Jagjit, for a wonderful session. Like you, every time you inspire us, recharge us for the gratitude. And I'm just doing my bit. no, thank you so much for doing it. And when you were saying for Rajvin, I think you had already created enough that when she was sharing, we are all, praying that she gets, healed and also gets the job now, what she is looking for. Yeah. So let's all, send her the blessings for that. Yeah. If anyone wants to share. Let me stop the live stream, then just give me a second.